स्केन सिम्टम या सीन सिम्टम, तो ये जो स्केन सिम्टम है ये एफोरिज्म नंबर 248 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया हुआ है। तो ये जो साइन सिम्टम है ना, ये क्या होता है? 248 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिया हुआ है, इसको अपीयरेंस सिम्टम भी कहते हैं। तो साइन सिम्टम आता है अपीयरेंस सिम्टम काज्ड बाय एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्योर ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज़। तो जब भी हम क्रॉनिक डिसीज़ को ट्रीट करते हैं तो बहुत लंबे समय तक होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट खाता रहता है, तो एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको शाइन सिम्टम कहते हैं। दीज सिम्टम्स सून डिसअपियर एंड लिविंग बिहाइंड अ स्टेट ऑफ हेल्थ। जब ये डिसअपियर हो जाएगा तो हेल्थ आ जाएगी। क्रॉनिक डिसीज़ में क्या होता है? एवरी करेक्टली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन में बी रिपीटेड डेली फॉर मंथ with the ever increasing success, but modifying the solution of every dose with thorough vigorous succession, changing the degree of potency and increasing it। तो क्रॉनिक डिसीज़ में अपन क्या करते हैं? मेडिसिन को रिपीट करते हैं डेली और इंक्रीज़ करते रहते हैं, उसका इंक्रीजिंग सक्सेशन में देते हैं, बढ़ती हुई पोटेंशियल में उसको रिपीट करते हैं। तो इसकी वजह से जो एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से सिम्टम आते हैं उसको शीन सिम्टम या अपरेंट सिम्टम कहते हैं। बट देयर में अपीयर टूवर्ड द एंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अ क्रॉनिक डिसीज़ के ट्रीटमेंट के एंड में आता है ये। द डोज इन दैट केस मस्ट बी रिड्यूस स्टिल फर्दर। द डोज इन दैट केस must be reduced still further and repeated in longer interval and stopped several days to see if the convalescents need no further medicinal aid। तो डोज को क्या है कि अपन रिड्यूस करते जाते हैं, लॉन्गर इंटरवल में रिपीट करते हैं, स्टॉप कर देंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है, फर्दर रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये सीन सिम्टम। Symptoms schein, symptom caused by the excess of the homeopathic medicine will soon disappear and leave undisturbed health in its wake. If only a small vial, say a dram of dilute alcohol, is used in the treatment, in which is contained and dissolved through succussion one globule of the medicine which is to be used by olfaction every 2, 3 or 4 days, this also must be thoroughly succussed 8 to 10 olfaction. Medicine in a large 248 6th edition. For this purpose, we potentize anew the medicinal solution 1 with perhaps 8, 10, 12 succussions, from which we give the patient 1 or increasingly several teaspoonful doses, in long-lasting diseases daily or every second day, in acute diseases every 2 to 6 hours, and in very urgent cases every hour or oftener. Thus in chronic diseases, every correctly chosen homeopathic medicine, even those whose action is of long duration, may be repeated daily for months with ever-increasing success. If the solution is used up in 7 to 15 days, it is necessary to add to the next solution of the same medicine. It's still indicated 1 or, though rarely, several pellets of a higher potency, with which we continue so long as the patient experiences continued improvement without encountering one or another complaint that he never had before in his life. For if this happens, if the balance of the disease appears in a group of altered symptoms then another, one more homeopathically related medicine must be chosen in place of the last and administered in the same repeated doses, mindful, however, of modifying the solution of every dose with thorough vigorous succussions, thus changing its degree of potency and increasing it somewhat. On the other hand, should there appear during almost daily repetition of the well-indicated homeopathic remedy, towards the end of the treatment of a chronic disease, so-called Section 161 homeopathic aggravations by which the balance of the morbid symptoms seem to again increase somewhat, the medicinal disease, similar to the original, now alone persistently manifests itself. The doses in that case must then be reduced still further and repeated in longer intervals and possibly stopped several days, in order to see if the convalescents need no further medicinal aid. The apparent symptoms schein, symptom caused by the excess of the homeopathic medicine, will soon disappear and leave undisturbed health in its wake.